we discuss about the font and color class in applet programming. Applet is a Java program that can be embedded into a web page. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. Applet is a program. In this session हम थोड़ा applet के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे. Applet is a special type of a program. It contains the dynamic content, and applet can be run in the client side. It is the secured, and applet is run on the browser. So many operating systems, they support the applet, just like the Windows, Mac OS, etc. But what is the disadvantage of this applet? The plugin is required at the client browser to execute an applet. So these basics हमने previous lecture में देखा था. In previous lecture we also discussed what are the different steps for creating an applet. If we use the advanced Java programming, we use the applet everywhere, every program. So for to understand the concept of the applet programming, we just revise this again. Why? Because the font and color class, you know that if you create the web page or website, then your program or your software, your front end is always look good. So user can be more attractive if you attract the user for the by using the design of the font class and color class. Then what? User is easily understand the web page or our the front side of our the software. So more attractive or more design purpose, we use the font and color class in shortly. The font and color class is already you are studied in the last semester of the Java program. So we start our session. In this session we cover the steps for creating a applet program, simple applet program to display a string, font and color class. Okay. Steps for creating a applet program by using applet viewer tool. If you have to create the program, first of all you create or open the notepad, and you can be save your file by using the extension of the Java. Means what? If you use the extension .java, means what? Your file is run by using the
compiler, that is the Java C. Means what? You can be easily convert your the main program into a bytecode by using this Java C compiler. So what? Your file is always having the extension of this Java. Then what? Second line or second step is the import package. Import package. Every time, every program must includes these two packages, and our Java program is always starts by using these two packages. The first package is the java.awt. AWT means Abstract Window Toolkit, that used for the graphics purpose. And second one is the java.applet. This class is always used to display the applet class or for applet. Then we turn to the next step. In this next step, we have to just find display a simple syntax is that create the applet file. How to create the applet file? Simple, public class file, a applet file name or applet subclass name, and extend applet. Here we use the public. Public means what? The class can be easily accessible by the outside of the program also. Means here we use the simple line public class welcome extend applet braces start and braces end. So all of you understand these three steps are important. Then फोर्थ स्टेप, चौथी स्टेप, इसमें हमने पेंट मेथड का यूज किया है, जो कि पेंट मेथड एप्लेट के क्लास के रिलेटेड है और ड्रॉस्ट्रिंग मेथड ये जो ग्राफिक्स क्लास के रिलेटेड है. सो वी यूज द ग्राफिक्स क्लास that is available in the java.awt package. So here we create the object of the graphics class and that is displayed, that is used for the content of the drawstring. So graphics class and drawstring. In this हमने यहाँ पे क्या किया है? We call the paint method by consideration with the drawstring. And the drawstring ये क्या है? ये graphics class का member है. So हमने यहाँ पे और क्या किया है? We display the output of the string and that is a beginning at the specified by the x and y coordinate. Means what? 150 and 150. What is this? This indicates that your output is generated by the taking the coordinate of the x and y from the left hand upper left corner, and our the upper left corner means this is our the upper left corner is start by using the position 0 and 0.
सो सिंपल सिंटैक्स ऑफ द ड्रॉ स्ट्रिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ड्रॉ स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या है? सिंपल। ड्रॉ स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग इंटीजर x इंटीजर y means what? Your message is displayed by taking the upper left corner in the location of the 0 0। अब थोड़ा सा हम एप्लेट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। अब एप्लेट जो है, हमने अभी तक जावा एप्लीकेशन देखे हैं। तो जावा एप्लीकेशन में जो भी प्रोग्राम हमने किए थे या जो भी हमने आउटपुट हमने देखे थे, उसका जो आउटपुट जो हमने देखने के लिए हमने क्या यूज किया था? import io.star and within this we use the system.out.println. Instead of this we use the drawstring. So that is the main basic difference of this applet and main Java application. Here is what also in नेक्स्ट सेशन, प्रीवियस सेशन हमने देखा था कि एप्लेट प्रोग्राम ये जो है, ये इट इज नॉट कंसिडर्ड मेन फाइल। मेन मेथड मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लेट इज डज नॉट begins at the main method. So we just revise what is the applet. Applet is also is directly or indirectly use the all the applet class methods. So we turn to the next point, next step, that is the write a applet tag. Write a applet tag. So what is the applet tag? Generally what happens, you know that you can be use the execute the Java program, or execute the applet. For that purpose there are the basic two steps, means that requires the Java compatible web browser, or another one is the by using the applet viewer. It is the standard tool, and applet viewer is the very fastest and easiest way to test your the applet. So we use the applet viewer. So applet is embedded in HTML. So why applet tag is needed? The applet is embedded in a HTML page by using the applet tag, and that is the hosted by the web browser. So how to embed the program into an HTML? By using the applet code. It is the comment start by using the /*, then comment end by using the */. Applet code is welcome.class width height, exactly the window position, it is the width and height. So all of you understand this. The next is the compile. How to compile the program? If you compile the program, at that time we always use the simple syntax, that is the Java C filename.java, Java C welcome.java. Here is what is the welcome? In this we first create the file welcome.java, and then
after compiling, you get the errors, syntax error, logical error. So for this purpose, we use the compiler javac. The next is how to run the program. I have previous applet here is the tool, standard tool, fastest tool to run the applet, run the Java applet by using the applet viewer file name.java. So applet viewer is the important tool that is support for this applet programming. So applet viewer is the very easiest and fastest tool is available for us for the test over the applet. So I just revise this. Simple, you understand the steps. First step is the Java file. Then second step, import package, creating the applet class. Third is the paint method, and fifth one is the applet tag. Sixth one is the compiler, and seven is the applet viewer. So all of you understand this. Simple. Here I explain you a simple program. Write a Java program to create an applet to display the message welcome to the Java programming. Here is what I write the program in the notepad, and that screen or that content of the program is displayed to you. Here is what, again, those steps. First, import file. How you can be import? By using the import java.applet, import java.awt.star. Means first step is complete. Second step, what is the second? In this second step, we create the applet class. Here is what all of you just read. First step is what? Welcome.java, import package. Third is the applet class. Here is what? First, welcome.java is the file name. Second step, import package. Third, we create the applet class, public class welcome extend applet. तो हमने अभी तक 3 स्टेप में क्या किया है? पहले स्टेप में हमने क्या किया है? सिंपल, हमने नोटपैड ओपन किया है। नोटपैड में हमने welcome.java फाइल ये सेव की है। देन हमने उसके बाद में इंपोर्ट पैकेज का यूज किया है। इंपोर्ट पैकेज में हमने java.awt.star यूज किया है और हमने java.awt पैकेज का भी यूज किया है। उसके बाद में हमको एप्लेट का फाइल का क्लास तैयार करना है और उसके लिए हमने पब्लिक क्लास applet file name, the name of this applet is the welcome. So our the file name and class name is the same. File name is the welcome and class name welcome is the same. So we create the applet class by extending the applet. सिंपल स्टेप, सिंपल यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट की है। उसके बाद में हमने चौथी स्टेप में इसमें क्या है हमको कि ओवरराइड द पेंट मेथड बाय यूजिंग द ग्राफिक्स क्लास। अब यहाँ पे कैसा है? पब्लिक वाइड पेंट मेथड इज एसोसिएटेड विद दिस एप्लेट क्लास and graphics method is associated with this AWT package. So we create the first object of the graphics class, that is the object of the graphics class क्या है? graphics G। और हमको G ऑब्जेक्ट जो है हमको उसके थ्रू G ऑब्जेक्ट इज द ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग क्लास is the consider the many methods. So ग्राफिक्स क्लास हम उसका यूज बहुत है। उसका यूज हम रेक्टेंगल, ओवल, लाइन,
These are the different shape. If you want to be a draw by using this graphics programming, then this graphics class can be used. If all of you interested, then we conduct another session for this graphics program, that is also important for the designing our the web page or website. So graphics class is useful for us. देन नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है, उसके थ्रू हमने जी ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने ड्रॉ स्ट्रिंग यूज मेथड करके, ड्रॉ स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या है, स्ट्रिंग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मींस इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट पिक्सेल पोजीशन, वाई कोऑर्डिनेट मींस इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट द पिक्सेल पोजीशन. सो हमारी फोर्थ स्टेप अभी कंप्लीट हुई है. अब पांचवी स्टेप में हमने क्या किया है, जैसे ही हमने कंपाइलर प्रोग्राम होता है उसके बाद में हमारा आउटपुट जो है बाइट कोड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट वेलकम डॉट क्लास में आता है. तो उसको हम जो ब्राउज़र पे रन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो जावा बाइट कोड है वो हमको HTML फॉर्म में कन्वर्ट करना है और दैट इज कन्वर्टेड बाय यूजिंग दिस एप्लेट कोड. So to merge the dot class file with the browser, that the mediator is applet code, and this applet code is act as a HTML to convert our the Java applet file into a browser window. So it is the important step. If you do not use this applet code, then you don't get your the output. For output purpose, applet code is always needed for the applet program. In last session we just revise fast, but in this session, in this program, all of you easily understand. So this is the main program welcome.java, and these are the four step. Five step is covered in this program. So next part is fifth, sixth and seventh step. So I create one output window. Output window means if we go the sixth and seventh step. Sixth step is what? It is the compiler of our Java program. You know that how to compile the Java program. For compilation, we always use the javac file name .java, and for compiler means in Java application we always use the javac file name .java, and for interpreter simple Java file name. But applet is a different one. So applet purpose we use the applet viewer. So to execute the program by using the applet viewer, we need a simple steps. Here is what I save the program into a C drive AJP program. In this I create the welcome.java file, and first syntax is what? Javac welcome.java, and second step is what? Applet viewer welcome.java. In next session we create the program by opening the Java application, and then what? I type the program into a notepad, and then what? One by one all the steps is to be recorded, and then you just find out what are the basic problems of the syntax. You are the output in the form of that dot class file in the bytecode. After getting the bytecode, you can be run your the dot class file. So applet viewer welcome dot java. Then what? You get the output simple. Here is your
output. Welcome dot class. So then next part is font class. Font class. Font class is represent a font to select the new font. Then font object. This font class is used the font name, font style and font size. Font name is all of you knowing Times New Roman, Arial. Font style is the three parts: font dot bold, font dot italic, font dot plain. This constant is font dot bold, italic and plain. Now, font size is the 12. So set font method. What is the set font method? It is used to set the graphics current font to the specified font. Means first is what? You create the object font F. This object can be created by using the existing font class. Then proper syntax उसमें हमको फॉन्ट का स्टाइल कौन सा है? 3 स्टाइल रहते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड प्लेन. देन बोल्ड के लिए हम क्या यूज करोगे? फॉन्ट डॉट BOLD कैपिटल. इटैलिक के लिए फॉन्ट डॉट इटैलिक इज कैपिटल एंड फॉन्ट साइज इज द 12. So how to set the font? By using the set font with the specified object. How to? Then object is कौन सा है हमारा? यहाँ पे F object है, तो हम उसको set font F करते हैं. Then color class. Color class is also color class में बहुत सारे कांस्टेंट हैं. कलर डॉट ब्लैक, कलर डॉट रेड, कलर डॉट पिंक, कलर डॉट ऑरेंज, कलर डॉट ग्रीन. सो यू कैन बी यूज ऑल द कांस्टेंट इन योर द प्रोग्राम. सिंपल. यहाँ पे क्या है? इफ यू वांट टू बी सेट द कलर क्लास, सेट द कलर बाय यूजिंग द ग्राफिक्स मेथड. हमको यहाँ पे एक मेथड जो है उसका हमको स्टडी करना है, और वो जो मेथड का नाम है सेट कलर. सो इसमें हमने सेट कलर और कलर सी हमारा सिंटैक्स है. सेट कलर कलर सी, जी डॉट सेट कलर कलर डॉट रेड. तो जी डॉट सेट कलर कलर डॉट रेड, ये सिंटैक्स थ्रू हमारा कलर सेट हो सकता है. तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है. सिंपल, आई डायरेक्टली यूज द सेट कलर मेथड with the collaboration of this graphics class. Means what? I directly use the set color method with the graphics class g dot set color color dot red. तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है. सिंपल प्रोग्राम, write a program that shows how the background color and set font of an applet window by using the set background and set color method of the component class. यहाँ पे हमने क्या किया है? सिंपल, इंस्टेड ऑफ दिस import AWT एंड import applet, हमने जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट यूज कर ले, जैसे कलर क्लास हमने यूज किया है java.awt.color, java.awt.font. You directly write java.awt star also. Here we create the one applet file, and in this first line is what? In directly set background color dot orange. So what? I directly display the output color dot orange, means you get the background is the color dot orange. Then here is what? I create the font object, font F equal to new font, impact font है, और font dot italic 22 साइज है, और हमने font का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. तो जो भी हम टाइप करने वाले हैं वो that output is displayed by taking the values of this font class. So you want to be set font by using this graphics class g dot set font.
देन जी डॉट सेट कलर, हम जो भी टाइप करने वाले हैं वो उसका कलर जो है रेड आएगा, जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट रेड। और हमने ABCDEFGH ये जो टेक्स्ट टाइप किया है और उसका आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा। सो आउटपुट के लिए हमारा थैंक यू।